Dear students, in this module, we shall discuss some general properties of action potentials. The action potentials are also known as spikes or nerve impulses. They are generated by the plasma membranes of excitable cells, which are neurons, muscle cells, receptor cells, and some secretory cells. The action potentials differ in different types of cells due to different channel properties. The shapes, magnitudes, and time course of all action potentials generated by a single type of cell is always or essentially identical. The action potentials propagate along the nerve fiber without reduction, that is, without decrement in amplitude. The speed of propagation of action potential also remains constant. इसके अलावा एक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस भी रिक्वायर्ड होती है, एंड दैट मिनिमम स्ट्रेंथ इज नोन एज थ्रेशोल्ड. दिस थ्रेशोल्ड और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ranges from minus 50 millivolt to minus 30 millivolt for various types of neurons. If a threshold is weak, then it fails to produce an action potential. इस तरह के स्टिमुलस को हम सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं. इसके नतीजे में जो डिपोलराइजेशन होती है, दैट कॉजेज फेल्ड, अबॉर्टिव एंड नॉन प्रोपेगेटेड एक्साइटेशन, विच इज कॉल्ड लोकल रिस्पॉन्स. Dear students, one more important property of action potentials is that action potentials are all or none events. An excitable membrane responds to a stimulus either with a full-fledged propagating action potential or it does not respond at all. This is known as all or none law. There is no in-between action potential. कोई half action potential generate नहीं होता. This principle just works like the gunfire. जिस तरह से एक गन का ट्रिगर दबाने से एक फायर होता है और गोली एक खास रफ्तार के साथ चलती हुई एक खास फासले तक जाती है. ट्रिगर दबाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड. अगर हम बहुत जोर से ट्रिगर दबाएं, यानी सुपर थ्रेशोल्ड प्रोवाइड करें, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि फायर ज्यादा तेज होगा और गोली ज्यादा दूर तक जाएगी. इसी तरह से अगर हाफ वे ट्रिगर को प्रेस किया जाए तो ये नहीं कि गोली हाफ चलेगी, बल्कि वो चलेगी ही नहीं. सिमिलर इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स. Dear students, another important property of action potentials is that they are regenerative. Action potentials जब एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इनिशिएट करवा देता है एक एक्शन पोटेंशियल को, तो उसके बाद एक्शन पोटेंशियल अपनी सेल्फ परपेचुएशन करता रहता है. इट बिकम्स रीजनरेटिव. एक्शन पोटेंशियल एक्चुअली थोड़े से टाइम के लिए एक थोड़ी सी प्लेस में प्रोड्यूस होता है. ये एक्शन पोटेंशियल अगर वहीं पे खत्म हो जाए तो फिर सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंचाया जा सकेगा. इसके लिए जरूरी है कि एक्शन पोटेंशियल में ये वाली प्रॉपर्टी पाई जाए जिसके तहत वो अपने आप को जिस तरह का वो स्टार्ट में प्रोड्यूस हुआ है वो कॉन्टिन्यूअसली उसे परपेचुएट करता रहे. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रीजनरेशन. सो दिस आल्सो रिक्वायर्स नो फर्दर स्टिमुलस. ये बगैर किसी फर्दर स्टिमुलस के भी कंटिन्यू रहेगी रीजनरेटिव प्रॉपर्टी. The time duration of an action potential varies in neurons, but in mammalian neurons of peripheral nervous system, this typically lasts for only a millisecond or so. 1 or 2 milliseconds में एक एक्शन पोटेंशियल मुकम्मल हो जाता है. As compared to this,
the invertebrates neurons produce action potentials which have a timing of about 10 to 100 milliseconds. Invertebrates, the hearts or heart muscles, produce action potentials of longer durations which may take about 500 milliseconds. This is required for the regulation of cardiac cycle. Dear students, the movement of ions that occurs during an action potential actually involves a small number of ions. The number of ions which are used in maintaining a resting membrane potential are quite large. जिस वक्त एक्शन पोटेंशियल के लिए आयनिक चेंजेस रूनुमा होती हैं, तो उस वक्त इस नंबर में जो तब्दीली आती है जिसकी वजह से बहुत बड़ी एक्शन पोटेंशियल में तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, actual number of ions is not very large at that moment. We can take an example of squid giant axon, जिसमें एक एक्शन पोटेंशियल के लिए जब डिपोलराइजेशन करने के लिए सोडियम आयंस एंटर होते हैं, तो ये जो सोडियम आयंस एंटर होते हैं इनकी रेशो अगर काउंटिंग में देखी जाए तो दैट इज ओनली 0.0003% of the total sodium ions that are present inside the cell.